आता है कोई भी मेरा कि रीशेड्यूल करना है, ये है वो है, आई विल बी कॉन्टेक्टिंग यू टू ओनली, फिर आपको पूरे बैच को पूछना है। ठीक है, तो एटलीस्ट आई होप के बाकी सबके कॉन्टेक्ट नंबर्स होने चाहिए आपके पास, नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप से ले लेना। ठीक है, से दिख रहा है आरबीआई इम्पैक्ट, ये ग्रीन कैंडल एक्चुअली बड़ा टाइम फ्रेम है। लेट मी जस्ट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एबल टू सी? यस सर। यस सर। यहाँ पे ये चल रहा था कुछ 57, ठीक है, और यहाँ पे 262, शायद उससे भी ज्यादा गया। आई वाज जस्ट कमिंग ऑन द वे, जस्ट टेक द टाइम, देखो 10 सेकेंड्स, कैन यू सी 10 सेकेंड्स हुए ट्रेड को, 160 से डायरेक्टली 184। मैंने तो 2 ही लॉट लिए थे, बीच में रास्ते पे था, आई वाज नॉट श्योर कि कुछ हो जाए, देखने को मिले ना मिले, निकल जाता। 1000 हो गया ना वो, 20 पॉइंट्स इंटू 50 इज द लॉट साइज, 10 सेकेंड्स, बस यही होता है ऑप्शन में। परफेक्ट टाइम, एग्जिट एंड एंट्री जो भी मिले लेके निकल जाओ, डोंट वेट। अब वो वहां से गया था 284, ये तो अनएक्सपेक्टेड होगा। गलती मेरा आज टाटा स्टील में हुआ, सी आई मेड अ लॉस ओवर हियर। आज एक्चुअली रिजल्ट देखा था ना कल मैंने मैसेज तो डाला था ग्रुप में, 1:10 का स्प्लिट है, ऊपर से 51 रुपीज डिविडेंड, तो सुबह एक्चुअली मैनिपुलेट हो गया स्टॉक में, गलती वहीं पे हुआ, और शायद ग्लोबल मार्केट्स एंड आवर लोकल मार्केट्स वर नॉट सपोर्टिंग, तो इसलिए वो थोड़ा इम्पैक्ट आ गया। तो इसलिए क्या हुआ एक्चुअली से, आई हैव टेकन वेरी आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन। ठीक है, मैंने लिया था 8.35 और बेचना पड़ा 5 पे, तो वो लॉस हो गया ऑलमोस्ट। देन अगेन आई एंटर्ड इनटू पुट विथ वन लॉट, 259 पे था, 312 पे निकाल दिया, अभी वो ऑलरेडी 474 चल रहा है। सी कैन यू सी दिस वन, 3600 पुट, वो ऑलरेडी उतना चल रहा है, वो 600 जाके आया है वैसे आज, जस्ट चेक द हाई प्राइस। अरे 600 भी नहीं है, 667 है, तो डबल ही हो गया वो भी मेरा। तो ये थोड़ा उस टाइम मतलब सिस्टम होना, सिस्टम नहीं होगा और मोबाइल से मैं देख रहा हूँ तो इट विल बी डिफिकल्ट ऑफ कोर्स। फिर दूसरा मौका वापस आरबीआई ने दे दिया, चलो जो भी है लेके निकल जाता हूँ, तो मेरा लॉस रिकवर कर दिया और इसने मुझे प्रॉफिट में लेके आया, बस दैट्स इट। बस वहीं पे रुक जाओ, फिर जो कुछ भी आज मिला है वहीं पे लेके रुक जाओ, डोंट कैरी फॉरवर्ड योर सेल्फ फर्दर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग डिसिप्लिन, अगर ये आएगा तो सब, कोई भी ट्रेड में कोई भी कुछ कर सकता है। ठीक है, कि मैं यहाँ पे बुलिश था, यहाँ पे पुट में, सी इफ यू कैन सी, लेट मी शो दैट वेयर, ये तो थोड़ा पुराना है, ये गया था, हाँ यस, आई एंटर्ड ओवर हियर समवेयर 260, ये देख रहे हो, दिस सेकंड कैंडल नीचे नहीं जा रहा था इससे, एक बार गया वो लेकिन बाद में गया होगा, बट इन दिस ट्रेड आई एम टॉकिंग अबाउट, जब वो 279 का लो दिख रहा है और 342 का हाई है, तो उसके पहले कैंडल में मैंने एक्चुअली एंट्री लिया था, इट वाज नॉट गोइंग बिलो, बिकॉज इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम इफ आई एम चेकिंग, 5 मिनट का देखो, ये 15 मिनट का था इससे पहले बार, फिर आता है 5 मिनट का कैंडल्स, हर 5 मिनट में एक कैंडल बनता है, उसमें वो 15 मिनट में एक कैंडल बनता है, तो जितना लॉन्ग ड्यूरेशन का कैंडल है इट इज ऑलवेज स्ट्रेंथनिंग, वो बेटर आइडिया देता है। अब इसको ही देख लो, अगर इसको आवली में कन्वर्ट करोगे ना तो कुछ और दिखेगा, अब इसको और मतलब 3 घंटे में लेके जाओ, कैन यू सी द डिफरेंस, हर एक में डिफरेंस वहीं पे आता है। बट आई गॉट दिस पर्टिकुलर आइडिया एंड आई वाज वेटिंग फॉर दिस ब्लू लाइन टू क्रॉस, और वो एक्चुअली मैंने वेट किया यहाँ पे क्यों, क्योंकि एक्चुअली मुझे 2 लॉट्स, एक्चुअली आई वाज गोइंग फॉर 4 लॉट्स, फिर थोड़ा कंट्रोल कर लिया कि भाई अगर गलती से भी 20-30 पॉइंट भी से, यू सो द जंप ऑफ 24 पॉइंट्स, अगर 4 लॉट भी होता तो डायरेक्टली 2400 था मेरा। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट इन दैट केस नीचे भी तो जा सकते हैं ऐसे ही स्पीड में, और आपको टाइप करने का भी टाइम नहीं मिलता है उतना। गेटिंग माय पॉइंट, अभी तो, अब जैसे फॉर एग्जांपल आई एम सेलेक्टिंग, आई एम एंटरिंग ओवर हियर, ओके 100 एंड देन आई एम टाइपिंग द प्राइस, तब तक तो गाड़ी छूट जाती है ऐसे वायलेंट मूवमेंट्स में। और इसको बोलते हैं इंडिया विक्स, इफ यू हैव सीन इट कुड हैव बीन इंक्रीज्ड, आई थिंक सो। अपना वो विक्स देखा था ना हम लोगों ने, सी द वोलेटिलिटी 6% बढ़ गया डायरेक्टली, तो वो मौका ही नहीं देता है फिर आपको नीचे ऊपर करके कहीं पे, तो आप मतलब या तो उस पार या तो इस पार, बीच में तो रहते ही नहीं हो। And this volatility is only increased because repo rate hike कर दिया है, inflation is shooting up like anything, उसका impact आया है markets पे।
मतलब दैट्स फॉर वेरी श्योर कि आज की जो फेड मीटिंग है वहां पे भी उनके रेट्स बढ़ने वाले हैं। हाँ एग्जैक्टली हिंट दिया था। वो फ्लैट रहेगा। अगर 40 से ज्यादा जा रहा है ना, 50 किया, 60 किया, 70 80 तक चले गए, तो समझ लो कि कल तो मार्केट क्रैश ही करेगा। फिर पूरा पैसा निकल जाता है उस टाइम पे। सी कितना चल रहा है स्पॉट प्राइस, 35,700। मैंने देखो सब आउट ऑफ मनी वाले ही ट्राई किए थे, वो एक ही था कि जो इन द मनी था। व्हाई? बिकॉज आई वाज कैचिंग द मोमेंटम ओवर देयर। बट ये तो 35,500 आउट ऑफ मनी था, फिर भी इजीली इट गेव द मनी। ठीक है, अभी भी 168 आसपास चल रहा है। मेरा एक्चुअली प्राइस था यहाँ पे 160 वाज माय एंट्री पॉइंट समवेयर। मैं बताता हूँ क्यों वहां पे एंट्री लिया था। समवेयर वाज दैट, हाँ ये एक्चुअली यहीं पे था, सी दिस पर्टिकुलर ब्लू लाइन। Now still it is not breaking that blue line. The blue line उसको बोलते हैं सेंट्रल पाइवोटल पॉइंट टेक्निकल एनालिसिस में। सो द चार्ट हैज टू, यहाँ पे एक बार ट्राई किया, वापस से गिरा दिया। यहाँ पे जब गिरा सी तो वॉल्यूम, उसके बाद आता है वॉल्यूम। अब यहाँ का वॉल्यूम देखो, ये सब रिटेल वाला है, यहाँ पे कोई रिटेल वाला नहीं है। हम लोग बीच में कहीं पे गए, बीच में कहीं पे निकल गए। हमने तो उतना ही काम किया है। जिसने भी काम किया इसने यहाँ से किया है, 59 से डायरेक्टली 286। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट कितना हो गया, 60 का टू 300 ही गिन लेते तो 5 टाइम्स हो गया इन जस्ट 15 मिनट्स। ठीक है, 5 गुना पैसा बन जाता है 15 मिनट में। एंड आई थिंक आई एम स्टिल बेरिश। जैसे लग रहा है ये ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर इससे नीचे जाता है ना, अगर इफ इट ब्रेक्स दिस लेवल, दिस और दिस समवेयर हियर, तो ये जीरो हो जाएगा कल। कल वैसे ही एक्सपायरी है, नहीं टेक अ चांस। अगर 1000 रुपए खोने का चांस है तो ट्राई कर लो रियल ट्रेडिंग में। यू रियली वोंट सस्टेन योर सेल्फ। इमोशंस जो आएंगे ना फिर उस टाइम पे, वो अलग ही लेवल के होंगे। देखने में बहुत लगता है अच्छा ये तो 60 पे मिल रहा था, मैं तो निकालूंगा 120 पे। 24 points was the only thing I have just sustained 10 seconds. मुझे तो डायरेक्टली 1000 दिखा, निकलो, और मैं यहाँ पे आ रहा था क्लास में। वाई टू वेट एंड वाई टू वेस्ट दोनों था। 1000 रुपए 10 सेकंड में क्यों जाने दे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डिड यू चेक? हेलो, यस सर। ये आवाज इसमें कम क्यों आती है वैसे? Anyways, चलो। So that's why you need to stay at least, जब कोई इवेंट हो ना आरबीआई वाला, आरबीआई पॉलिसी जब कुछ भी है, जस्ट ऑब्जर्व बैंक निफ्टी ओनली फॉर दैट वेरी शार्प टाइम। हाँ मतलब अगर 2 बजे बोला है तो 2 बजे के से लेकर कम अप्रोक्स, मैंने कब लिया था ये, हाँ सी मैक्सिमम वो 5-10 मिनट का ही खेल है। और मैंने थोड़ा लेट एंट्री लिया था, बट आई वाज वेटिंग फॉर दिस 160 टू क्रॉस। अगर क्रॉस नहीं करता तो मेरा एंट्री लेने का मतलब ही नहीं बनता वहाँ पे। आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दिस थिंग। अभी भी सेम प्राइस भी है 184 184, लेकिन ऊपर घूम के आ गया बहुत। कहाँ तक गया? 294 मैंने निकाला, उसके बाद वो एक्चुअली वेंट टू 294। और यहाँ पे जो घुसे है ना 240 प्लस में, वो लोग की हालत खराब है। वहां पे रिटेलर्स ही होंगे डेफिनेटली। वो लोग पोजीशंस इजीली नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि लॉस में चल रहे हैं अभी। दिक्कत ये आता है। इसने बहुत वेट करवाया। कैन यू सी 10:30 को लिया था, 11:10 को मेरा टर्न आया। नॉट 11:10 ऑल्सो, 12:10 सॉरी। ऑलमोस्ट मेरा 1.5 घंटा निकल गया। बहुत बीच में ऊपर नीचे करके इट एक्चुअली वेंट टू 220। पहले 300 तक गया भी, फिर 300 से वापस 220, मतलब वापस मेरा लॉस स्टार्ट हो गया। बोला आज तो लॉस का ही दिन चल रहा है। लेकिन पेशेंस था फिर अल्टीमेटली। वहां पे दूसरी बार इमोशन आता है। वो बोलते हैं ना कि एक में लॉस है तो दूसरा लॉस रिकवर करने के लिए वी विल वेट टू द एक्सट्रीम। तो फिर वो वेट किया, फिर 12 बजे मौका मिला निकलने के लिए।
यहाँ पे पॉइंट्स ज्यादा कवर किए हैं, से 262 312, ऑलमोस्ट लाइक 50-60 पॉइंट्स यू आर कवरिंग, लेकिन और ज्यादा था, बट ठीक है चलो जो मिला उसमें हैप्पी। बैंक निफ्टी में यू कैन डू ओनली दिस मच, यू कांट ट्रेड 100-200 पॉइंट्स एट अ स्ट्रेच, इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है। और मल्टीपल लॉट्स तो भूल ही जाओ, एक लॉट भी मतलब रहेगा ना तो भी 1000-2000 तो इतना ऐसे ही घुमा दिया। 1000 मतलब कितना 40 पॉइंट्स हुआ, 25 इज द लॉट साइज, और 2000 मतलब कितना 80 पॉइंट्स, तो बैंक निफ्टी के लिए 40-80 पॉइंट्स तो कुछ नहीं है दिन में। इवन इफ यू चेक दिस, आई थिंक 35-200 पुट ऑप्शन, इफ इट इज इन पॉजिटिव तो कल तो भयानक होगा कुछ तो। 55 लो बना था, 177 वाज द हाई, अभी भी प्लस में चल रहा है। इसका मतलब पता चला, इफ कॉल ऑप्शंस आर इन रेड एंड पुट ऑप्शंस आर इन ग्रीन, कैन एनीवन टेल मी व्हाट डज दैट मीन? कॉल ऑप्शन ऊपर है, कैन यू सी ओवर हियर, और यहाँ पे पुट ऑप्शन ग्रीन में है, कोई बता सकता है क्या चल रहा है? कॉल ऑप्शन मतलब मार्केट नीचे चल रहा है। नहीं वो ठीक है, लॉस कॉल राइटर्स आर एक्टिव, एग्जैक्टली ठीक है। कॉल राइट क्यों करेंगे, वो जीरो कर देंगे कल इनको, ठीक है। तो इनका प्रीमियम जस्ट इमेजिन कितना था पहले, 3600 कितने पे चल रहा था, आज 283 तक गया था, उसको 64 कर दिया। तो समवन ने स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम 283 से लेकर धीरे धीरे बीच बीच में निकलते गए, बाकी नए लोग ऐड होते गए, ओपन इंटरेस्ट ऐड होता गया, कॉल राइटिंग। नाउ इफ वी सी 36300 तो बहुत सारे कॉल राइटर्स होंगे, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट कॉल राइटिंग इज बीइंग गोइंग ऑन। ये 226 हो गया, अभी 184 था ना, अभी 184 का मेरा ही था ये वाला 35500 पुट ऑप्शन, ये वापस से मतलब उठा है। मतलब आज कुछ नेगेटिव न्यूज आएगा यूएस मार्केट से, थोड़ा इंडिकेशन है, थोड़ा हमने ऐड कर दिया है रेपो रेट बढ़ा के। एटलीस्ट ऑन द डे ऑफ आरबीआई इवेंट एटलीस्ट एक लॉट ट्राई करो, बट डोंट टेक मोर देन 1000 रुपीज रिस्क, ठीक है। स्ट्रिक्ट एडवाइस, थोड़ा इमोशंस के साथ प्ले करना है वहां पे। क्विक एंट्री क्विक एग्जिट, ये फॉर्मूला होना चाहिए। फिर 10 मिनट के बाद लगता है कि आरबीआई न्यूज आ गया, डाइजेस्ट हो गया मार्केट में, उसके बाद वेट कर रहे हो तो बात खत्म हो जाएगी, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा मार्केट में। जैसे ही न्यूज आता है क्विक एंट्री देख लो फटाफट, कॉल बढ़ रहा है कि पुट बढ़ रहा है, 700 पॉइंट दूर वाले ओटीएम ऑप्शन साइड में रख दो। कैसे करना है आपको, वॉच लिस्ट क्रिएट करना है। आई वाज बुलिश ऑन टाटा स्टील, टाटा स्टील को भी इन लोगों ने 1.5% आज नेगेटिव कर दिया, कैन यू सी? ये एक्चुअली कितने तक आज सुबह कितना कैसे गया था सी, और अभी क्या प्राइस चल रहा है? इट वेंट टू 1330 और अभी 1275 पे आ गया। तो इसको भी मतलब आज तो ऐसे ही निकाल दिया किसी ने। आई वॉज बेरिश ऑन डिक्शन, डिक्शन बहुत अच्छा था आज के लिए, मतलब टाइम मौका नहीं मिला करने ट्रेड करने के लिए। सी उसका पुट ऑप्शन अगेन, डिक्शन कितने पे चल रहा था, इफ यू कैन सी ओवर 3800, ठीक है। अब उसका लो बना है 117 और अभी ये 189 तक होके आया है पुट ऑप्शन। एक्चुअली डिक्सन के न्यूज कुछ तो नेगेटिव है, आई एम नॉट श्योर, मैंने कहीं पे देखा नहीं है, बट समवेयर आई हैव रेड कि उसका टारगेट अभी 2500 या 3000 ही है। तो आराम से 3000 वाला या ऐसा कोई पुट ऑप्शन लेके बैठ जाओ, आएगा तो ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा उसमें बहुत लॉस नहीं होगा फिर। आई डोंट थिंक अभी उसमें लिक्विड होना चाहिए, आई डाउट, लेट मी जस्ट चेक। 12 रुपए चल रहे, ठीक है, 12 रुपए मतलब कितना हुआ कैपिटल, 1500 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और पूरा महीना बाकी है मई मंथ, और इसको भी हेज करना है 29। अच्छा इसमें ये लिक्विड ही नहीं होगा, तो लेट मी जस्ट चेक। 3200, ठीक है, 3200 लेके 3000 वाला बेच दो, सिर्फ 12 रुपए का ही नुकसान है, प्रॉफिट विल बी अनलिमिटेड। कैसे? तो इसके लिए आपको ऑप्स्ट्रा में जाना पड़ेगा ना, अगर ये प्रैक्टिस नहीं करोगे ना कैसे, तो इट विल बी डिफिकल्ट नाउ। स्टार्ट एंगेजिंग इन दिस वे कि कौन सा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तब थोड़ा फंडामेंटली आपको आइडिया आएगा। से फॉर एग्जांपल कौन सा डिक्सन था ना, पुट बाइंग सेल कर देंगे, तो
12 पॉइंट का जो डिफरेंस है वही मेरा लॉस है और कुछ नहीं है दोनों में। सी द रिस्क रिवॉर्ड। आई एम बेरिश इन डिक्सन, दैट्स व्हाई। तो अगर मेरा लॉस होगा तो इतना ही होगा, नहीं होगा प्रॉफिट हो गया। और इन्वेस्टमेंट कितना है? 16,000। तो मुझे अभी ये लग रहा है कि LIC का IPO नेगेटिव में जाना चाहिए। अगर कल भी नेगेटिव रहता है हमारा दिस मार्केट्स, आई एम एक्सपेक्टिंग अ नेगेटिव लिस्टिंग फॉर LIC। वो सेंटिमेंट्स ही चेंज कर देगा मार्केट के। भले ही फिर कितना भी फंडामेंटल अच्छा हो, मार्केट वैल्यू अच्छा हो, ब्रांड अच्छा हो, जो भी है, मार्केट को कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है। इट विल ओनली वर्क ऑन सेंटिमेंट्स। लॉस इतना ही है मेरा, फिक्स्ड हो जाएगा वो 12 रुपए जो है। और अगर गलती से यहाँ तक ब्रेकआउट, कहाँ पे ब्रेक ऑन कहीं से भी होगा, सो आई कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3500 भी चला गया ना, समवेयर हियर आई विल से, नॉट हियर। यहाँ से वो 12 रुपए निकाल लेना, ठीक है। थोड़ा नीचे और गिराना पड़ेगा तब जाके आएगा। चलो कल भी मुझे लग रहा है कि मार्केट के नीचे आने के एक और टेक्निकल रीजन है। डेली चार्ट में बैंक निफ्टी इज नाउ ब्रेकिंग डाउन, कैन यू सी? देखा था डेली चार्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है अभी। इतना अपर ट्रेंड चल रहा था अभी, ठीक है। अब अचानक से इसका नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो गया। इसको अपर ट्रेंड चैनल बोलते हैं, और जैसे ही यहाँ से नेगेटिव आता है तो नेगेटिव ट्रेंड चैनल है। एक छोटा सपोर्ट है यहाँ पे, बड़ा सपोर्ट यहाँ पे है 35,100 और 35,000 आएगा तो वैसे ही बड़ा सपोर्ट आएगा। ओपन इंटरेस्ट होगा, पुट इंटरेस्ट वालों का बहुत सारा। अगर गलती से वो टूटा कल तो समझ लो कि पुट वालों की बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी फिर तो। बट अभी भी 500 पॉइंट दूर है, देखते हैं आधे घंटे में क्या करता है। अदरवाइज अगर ये टूटा तो डायरेक्टली यहाँ पे लैंड करेगा 34,000 पे कम से कम। लास्ट वाला यहाँ पे सपोर्ट है 32,000, वो तो बहुत दूर है, इतना नीचे नहीं जाएगा। थोड़ा गैप बचा है, बट आई डोंट थिंक कि बैंक निफ्टी इज गोइंग डाउन, क्योंकि कोटक के रिजल्ट्स अभी आए तो वो अच्छे हैं वापस, अभी जस्ट आए हैं। ठीक है, तो कल कुछ था क्या असाइनमेंट्स में? क्या क्या था? यस्टरडे हमने कहाँ तक देखा था? स्टॉक स्प्लिट और रिवर्स स्टॉक स्प्लिट देखा था। ये देखा था, ठीक है। एग्जांपल बायबैक पेंडिंग है, ठीक है चलो। ओके, कोई असाइनमेंट्स? कौन से? हाँ हाँ करेक्ट। हाँ कैसे हुआ? 1.68 रेशियो। ठीक है, हाउ मेनी शेयर्स? 42 शेयर्स, ओके ठीक है। इन एक्सचेंज ऑफ 25 शेयर्स ऑफ HDFC, ठीक है। हाँ वही हुआ फिर 1:1:0.8। ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, करेक्ट। मतलब इट्स नॉट योर फाइनल रिलीज ऑफ योर एनुअल स्टेटमेंट्स, बट अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया या क्वार्टरली उनको लग रहा है कि बहुत अच्छा आने वाला है, व्हाटएवर द केस हैज टू बी, they can definitely have the right to release the interim dividends.
आईटीसी का शायद हमने कल देखा था ना, आईटीसी या कौन सा देखा था 2011 से, कोल इंडिया या, तो इंटरिम डिविडेंड 2 बार दे दिया था। ओके या नेक्स्ट मार्केट। हाँ वो तो शायद कल डिस्कस हुआ था ना, वही है ना 20,000 CR, 5 से 20 और 5 से लेस, ठीक है। ओके देन क्वार्टरली, हाँ तो वो हर क्वार्टर में होगा डिविडेंड, बस वही है। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट, हाँ वो शायद हम लोगों ने कल थियरी में देखा, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट, एक प्राइस बढ़ाना है, शेयर प्राइस, वही है ना थियरी तो, हाँ यस ओके करेक्ट ओके ओके खत्म। चलो लेवल 2 में इतना नहीं आएगा अभी असाइनमेंट, ठीक है, कुछ कुछ बेसिक्स है, कोलेटरल में थोड़ा बहुत आएगा, अदरवाइज तो ये इतना थियरी है, यू विल से कि बस 2 घंटे में खत्म कर दो क्लास एंड वी वांट टू गो होम। ओके नाउ बाय बैक। सो व्हाट इज अ बाय बैक? It is the issuing company will be repurchasing the outstanding shares from the market, thereby reducing the liquidity of the stock. It is a management strategy to either increase the value of the shares or to eliminate any other threats by shareholders who may be looking for a controlling stake. इसको बोलते हैं पॉइजन पिल, जो ट्राई किया था ट्विटर ने, when Elon Musk wanted to have that particular stake, तो कंपनी कर सकती है ना बायबैक, अगर मैक्सिमम स्टेक उनके पास ही रहेगा तो एलोन मस्क कैसे बनेगा डायरेक्टली, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट कंपनी विल बी गोइंग फॉर अ बायबैक, और if I am going for a buyback, the stock price of that particular stock in the future will increase. For example, TCS buyback हुआ है 4,500 पे, अभी भले वो 3,800 900 जो भी है चल रहा है, ठीक है। जैसे ही एक बार वो स्टार्ट हुआ है ना बढ़ने के लिए, 4,000 जैसे ही टच करता है, बाय 4,500 कॉल ऑप्शन, वो जल्दी पहुंचा देंगे वहां पे, बट अभी वो कंसोलिडेट कर रहे हैं काफी टाइम से। Now what are features of buyback? Buyback increases the proportion of a shares a company is owning. Generally, shares are bought within a certain time frame and at a premium to the current market price. A company may buy back its shares without the shareholders' resolution. Remember that, to the extent of 10% of its paid up equity capital only, and reserves at any point in time. So write it down. How much percentage of buyback can be done by the promoters in the case of a buyback offer? तो 350 हो गया, 184 वाला हमारे नजर के सामने 172 350 डबल हो गया, ये तो कुछ ज्यादा ही शॉर्ट कवरिंग आ गई क्या अभी से। हाँ यस, ये तो उस दिन की तरह वो हमने ही देखा था ना शॉर्ट कवरिंग ऑप्शंस वाला, ये लिक्विडिटी नहीं रहता है बीच में, कभी कभी ऐसा लगता है हमको जब ट्रेड होते हैं ना एग्जीक्यूशन, सी 381 380, फिर बीच में कहीं निकलेंगे ऊपर जाएगा, सी डायरेक्ट 387, बीच वाले सब एक साथ निकल जाते हैं। इस टाइम पे बड़े प्लेयर्स मिंट मनी लाइक एनीथिंग, बहुत आराम से, मतलब प्रिंटिंग मशीन लगा के रख देते हैं, ऐसा लगता है।
अनएक्सपेक्टेड था ये तो। कॉल राइटिंग हमने अभी 10 डिस्कस किया था ना कि व्हाई दिस इज टर्निंग नेगेटिव। अब पता चला कॉल राइटिंग का मतलब क्या होता है, कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है। ठीक है, इसको आज ही जीरो करने के मूड में आ गए। होगा नहीं वैसे, बट ठीक है, कल कल तक का वो टाइम वैल्यू भी तो चाहिए 30 रुपए का, इतना जीरो जल्दी नहीं करेंगे। सी हाउ कैन यू कंट्रोल दिस वॉलेटिलिटी। 389 से डायरेक्टली 300। अब आप गलती से भी कहीं बीच में घुस गए हो एंड यू डोंट हैव दैट टाइम टू एग्जिट, कुछ हाथ में नहीं आएगा और अकाउंट साफ हो जाएगा। निफ्टी बैंक जिसको वो एक्सपर्टीज आ जाती है यू कैन इजीली ट्रेड, जिनको नहीं आती स्ट्रिक्टली अवॉइड। स्टॉक्स हैं, आराम से करो, गिरना है तो गिर जाओ, उठना है तो उठ जाओ, 5 साल के बाद कुछ देखे जाना, वो थियरी वाले हैं। ठीक है, स्टॉक्स आर दैट, आराम से कुछ कर सकते हो उसमें। यहाँ पे तो कुछ हाथ में ही नहीं आता है। चलो, सो एग्जांपल ऑफ बायबैक। It was observed in the last quarter of 2013 that the Apple stock had slipped below the market sentiments, and at that time, CEO Tim Cook had decided to have the buyback of that particular stock. Apple purchased shares worth $14 billion in a period of 2 weeks. अब कंपनी ने बायबैक स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली प्राइस वाज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, redemption, the repurchase of a security such as bond or preferred stock by the issuing company at the maturity of that security. The most common form of redemption is the final redemption. This is where the instrument has reached the maturity period and the outstanding amount of that loan is repaid to the bondholders. उनसे लिया होगा ना कंपनी ने तो लोन, जो भी जिसने बॉन्ड खरीदा है तो उसको वो पैसा वापस कर रहे तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस को रिडेम्पशन। That is also part of a corporate event. There are other types of redemptions. Example, where a bond is issued with a call option that allows the issuer to call in the bonds and repay them in accordance with the terms of the issue. Bonus issue we have seen. Example, ITC a long way back, PPT में देखा था. Okay, a bonus issue is a stock split in which a company issues new shares without charge in order to bring its issued capital in line with its employed capital. This usually happens after a company has retained the profit, thus increasing overall employed capital. ठीक है. A bonus issue can be seen as an alternative to dividends also. Why? Because वो free shares है ना, तो extra पैसा वो आपको ही मिलने वाला है at the end of the day. तो एक्स्ट्रा शेयर्स के जो भी पैसे मिल रहे, that is your ultimate profit in that stock. Let us assume that prior to the bonus issue you had 100 shares of RBS. The term of the bonus are that for every 1 share you had in the close of the business you will receive 2 bonus shares. तो 100 थे तो कितना आएगा, 200 एक्स्ट्रा, so 100 existing plus 200 bonus shares, कुल मिला के हुए 300। और प्राइस जो भी चल रहा है 200 शेयर्स तो मेरे फ्री है, I have not purchased them at my capital or through my capital. Okay. Bonus shares. Bonus shares are distributed to existing shareholders based on the number of shares they hold, but without changing the total market cap. मतलब अगर प्राइस उस टाइम पे 50 रुपए चल रहा था फॉर एग्जांपल, तो 100 into 50 कितना मेरा कैपिटल हुआ, 5000। Now if I am giving 1:2, मतलब 2 शेयर्स मिल रहे हैं तो 300 हो गया टोटल शेयर्स, तो you have to divide that 5000 divided by 300. That will be the new price of that particular stock, so that approx 16 के आसपास आएगा कुछ, because 16 into 300 is 4800. ठीक है, तो 16 17 के बीच में जो भी है, तो in that case you will find it 100 into 50 is equal to 16 into 300. समझ में आया कि नहीं है? किसको समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? हाँ, एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी नहीं था ना वो, नो एडिशनल लिक्विडिटी विल बी, लेट मी शो यू, कुछ लोगों को नहीं आइडिया है। सी so now price is say for example 60 rupees per stock. ठीक है, stocks held are 100, company announces bonus in 1:2 ratio, so for every 1 share held I will get shares as bonus. Then in that case my bonus shares is equal to 100 into 2 is equal to 200. Total outstanding shares held by me is equal to how much? 100 plus 200 equal to
300. Correct. Now initial investment 50, sorry 60. ठीक है, तो कितना हुआ इन्वेस्टमेंट 6000. अभी शेयर्स कितने हैं नाउ, शेयर्स इक्वल टू 300. सो 300 shares are there. My investment will remain as it is. ठीक है, equal to 6000 divided by 300. 20 rupees is the new stock market price of that. Why? Because 100 into 60, that has to be equal to 300 into 20. Clear everyone? Online students पता चला कैसे आया? Yes, sir. Yes, sir. I hope everyone is awake. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो ये बोनस शेयर्स का ऐसे कैलकुलेशंस करना है. कैपिटल चेंज नहीं होना चाहिए दोनों साइड पे. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हैज टू बी द सेम. जो भी शेयर्स है वो चेंज हो गए या तो प्राइस चेंज होगा. ठीक है, क्लियर? ये 400 पे चला गया. नहीं धूम में जा रहा है. 300 था ना. कहीं पे इसका ब्रेक ही नहीं हो रही है. 900 प्लस हो गया. सुबह इसको 300 मतलब दूर, मतलब 300 क्रॉस करने में 1.5 घंटा निकाल दिया और बाकी के 600 पॉइंट्स में इसने कुछ वेट ही नहीं किया है. सी इन दैट केस आप जब वो स्ट्रेटेजी करोगे ना, कॉल सेल पुट सेल, ये मत करना. अब यहाँ पे अब ऐसा कुछ होता है ना, कॉल और पुट दोनों बाई करना है. वाई? बिकॉज ये मैक्सिमम कितना 100-150 रुपए से 35 रुपए, मतलब आपका 100 रुपए का लॉस है. बट यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, 300 रुपए का है, तो 300 रुपए प्रॉफिट है और 100 रुपए का लॉस है, तो 200 रुपए आपका नेट प्रॉफिट हुआ. सो डोंट सेल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी इवेंट इन द मार्केट. रादर हेज इट बाय बाइंग बोथ आउट ऑफ मनी कॉल एंड पुट ऑप्शंस. ठीक है, क्योंकि प्रीमियम भी 100-150 के आसपास रहेगा, तो 300 रुपए का प्रीमियम है. अभी अकेला 420 के ऊपर जा रहा है. क्लियर? और इसका जो भी एक्स्ट्रा ऊपर मिलेगा वो अलग से. Okay. तो हेजिंग समझ में आया कैसे करना है? आप हेज तब कर सकते हो जब विक्स 20 या 15 से नीचे होना चाहिए. अब यहाँ पे ऑलरेडी 20 के ऊपर है. चांसेस आर वेरी हाई समथिंग विल फ्लक्चुएट आइदर कॉल और पुट. अब यहाँ पे एज ऑफ नाउ पुट इज फ्लाइंग लाइक एनीथिंग. ठीक है, वो अकेला 500 600 700 कभी कभी मतलब पहुंच जाता है. व्हाई? नाउ सी इट हैज बिकम इन द मनी पुट ऑप्शन. वो पहले आउट ऑफ मनी था, अब इन द मनी जैसे होता जाता है ना, तो उसका टाइम वैल्यू तो ठीक, इंट्रिंसिक वैल्यू छोड़ दो, टाइम वैल्यू ही अपने आप में शूट अप हो रहा है अभी भी. व्हाई? बिकॉज 35,165 स्पॉट चल रहा है और यहाँ पे 35,500. तो अभी तो 400 रुपए भी पूरा इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं हुआ है, लेकिन टाइम वैल्यू के हिसाब से देखो इसका कितना चल रहा है. क्लियर? So this is how it actually happens in the market. 2 बार चांस मिस किया नहीं आज, दोनों बार पुट में ही किया. ये इमोशंस फिर बहुत हावी हो जाता है अगले ट्रेड में. चलो एनीवेज, now stock split versus bonus shares. What is the difference? Write one question. What is the difference between stock split and bonus shares? तो यहाँ पे कॉल राइटर्स क्या करेंगे, जैसे ही उसका वो प्रीमियम कम हुआ है तो आप 36,000 पे शिफ्ट करेंगे जितना वो नजदीक आते जाएंगे, क्योंकि कल ही एक्सपायरी है.
तो उसमें वो 30 रुपए ही बचे। अब 30 रुपए का जीरो करने से अच्छा है 100 रुपए वाला जीरो करो। दे विल स्टार्ट गेटिंग मोर हैवियर। ठीक है, बेयर जब आता है ना तब बुल का कुछ नहीं चलता है, लिटरली। बेयर इज लाइक वन शॉट एंड दैट्स फिनिश। बुल बेचारा 5-6 बार अटेम्प्ट करता है तब जाके उसका कुछ होता है। बट हाँ, ओवरऑल सिनारियो फॉर एनी गिवन मार्केट विल बी बुलिश। कोई भी कंपनी ले लो, स्टॉक ले लो, कुछ भी ले लो, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स विल बी बुलिश। ठीक है, और जैसे लॉस हुआ ना टाटा स्टील में, एट दैट टाइम ओनली आई रियलाइज्ड कि आज कुछ नेगेटिव है सेंटिमेंट्स, अदरवाइज ये इतना नहीं गिराते इनको। हम लोगों ने 1300 वाला कॉल ऑप्शन ही राइट करना स्टार्ट कर दिया, तो कुछ स्पेस ही नहीं बचा था मेरे लिए। फिर वो वॉल्यूम से पता चल जाता है कि ये मतलब राइटिंग स्टार्ट हो गया है, कॉल राइट है कि पुट राइट है। ठीक है, ओके। नाउ बोनस शेयर्स आर वेरी सिमिलर टू स्टॉक स्प्लिट इन मेनी वेज। The number of shares a person will hold increases while the price falls in tandem. The difference between bonus issue and stock split is that while a stock split usually also splits the company's authorized share capital, the distribution of the bonus shares only changes its issued share capital. So write this particular line. What is actually the difference between this? आपने जो क्वेश्चन लिखा है उसके नीचे इसका ये आंसर है। ठीक है, the difference between a bonus issue and a stock split. स्टॉक स्प्लिट फेस में तो स्प्लिट हो गया प्रीमियम, जो स्टॉक की प्रीमियम नहीं नहीं नहीं, ऐसे वो स्प्लिट हो सकता है। आज मतलब ये कल टाटा स्टील हुआ तो उसमें फेस वैल्यू स्प्लिट नहीं है, प्राइस को स्प्लिट किया है। प्राइस डिवाइडेड बाय 10, नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज इनटू 10। इसलिए तो बोल रहा हूँ अभी टाटा स्टील खरीद सकते हैं, जब भी वो 129 वाला रेंज आ जाएगा या 130 140 जो भी रेंज होगा ना, दैट विल बी द बेस्ट टाइम टू बाय टाटा शेयर्स। मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि इतना ऑलरेडी 1200 तक पहुंचा दिया था। भले ही 3 साल लगा, 2 साल लगा, वॉट एवर, 10 टाइम्स मनी बनाना जिसका भी बना था, तो भले ना 2 साल और वेट कर लेंगे हम। और क्या, 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो कितना हो सकता है, 10 टाइम्स हो गया तो। हाँ 10 टाइम्स, हाँ 10 लैक्स करेक्ट। हाँ, बट पेशेंस रखना पड़ेगा। बोनस 1:5। 5 शेयर पे एक फ्री है। हाँ, एवरी 5 शेयर्स पे एक एक्स्ट्रा। स्पिन ऑफ हमने कल देखा था, dividing into a child entity from a parent entity so that the company can focus more on its core competencies. So spin-off will occur when an existing publicly traded company will sell part of its assets or distributes new shares in order to create a newly independent company. So right, what is spin-off? लिखा था कल की, बाकी है लिखा है ना? ठीक है, then do one homework. Identify examples, 3 examples of companies that have went for spin-off. Identify 3 examples of companies. Identify 3 examples of companies that have underwent spin-off. मतलब ऐसी कोई 3 कंपनी का नाम लेके आओ जिन्होंने स्पिन ऑफ किया हुआ है।
that have underwent spin off. Okay. Now, one of the example is mentioned over here. Agilent Technologies spun out of Hewlett-Packard, that is HP, formed from HP's test and measurement equipment division. The shares of Agilent Technologies were then offered to the existing shareholders of HP prior being offered to the new investors. Bankruptcy क्या होता है? What is bankruptcy? Complete क्या? Close company. So insolvency or default. So it is the inability of an individual or entity to pay its debts when they are due. It does always result in liquidation. An alternative is a reorganization in which the firm will obligate may be renegotiated. If reorganization does not work, company will file for liquidation. Most important, the lawyer who will be required, who is specialized and qualified for insolvency, is known as insolvency practitioner. Okay? Any party that is claimed outstanding can file a claim. In case of a liquidation, all the assets will be sold by the practitioner. If after all the debt has been paid out, there is something left, it will be paid out, processed to the equity shareholders. So सबसे पहले debt holders, फिर preference shares, and then last में equity वाले. ठीक है? So write the definition of bankruptcy, and also write who is an insolvency practitioner. मतलब वो lawyer कौन सा है? सुबह गैप अप होगा, फिर गैप डाउन होगा. ठीक है? प्राइस एक्शन थियरी करके एक आता है, दैट हैज टू बी फॉलोड. तो एक मौका सुबह मिलेगा वापस, अगर शॉर्ट ही है मार्केट कल तो, लेकिन आज रात की कमेंट्री देखनी पड़ेगी. ओनली नीड टू एंश्योर कि दोपहर में डाउ जोन्स फ्यूचर्स पॉजिटिव ना हो जाए, वरना पुट वाले बैकफायर हो जाएंगे. Dow Jones futures will start, you need to track दोपहर में 12 PM 1 PM के आसपास. पूछा क्या आपके ब्रदर को फीडबैक का? क्या हुआ? T3 बना दिया? अच्छा मैंने, ओके. तो मैंने थोड़ा अच्छा लगेगा ना, घर पे जाके कुछ तो होगा. फीडबैक ही था ना, वो जो इंक्वायरी था वो तो नहीं था, वो तो क्लियर हो गया ना. लेकिन अच्छा नहीं, तो मेरे से तो इंक्वायरी नहीं था ना, वही मैं पूछ रहा हूँ. एग्जैक्टली. हाँ हाँ, तो उनसे ही होगा ना, मेरे से तो वो होगा नहीं. मेरे पास तो वो फीडबैक ही आएगा ना. रिटर्न एवरीवन. ओके ओके. व्हाट इज डीलिस्टिंग? Delisting is a process of removing the security from the stock exchange. This can be done on a mandatory basis by the exchange or on a voluntary basis by the company. After the stock has been delisted, it can no longer be traded on that exchange. ठीक है, उसका नाम ही नहीं होगा exchange पे फिर. And no official on exchange price building is being tracked. So just highlight what is delisting. Otherwise आपको वो पता तो चल ही जाएगा. What is delisting? कंपनी डूबने वाली है या डूब चुकी है और कुछ बचा नहीं है तो नहीं, कभी कभी सेबी आता है पिक्चर में, सेबी ऑर्डर दे देता है
सब कुछ बंद करके निकल जाओ। Now, what could be the reason for delisting? The company is no longer compiling with the listing requirements of the exchange. मतलब company is not following the regulations of the exchange. Company becomes a private company, public limited to private limited. Trading volumes on the exchange it wishes to delist are not sufficient. कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है खरीदने में, ऐसा तो बहुत मेरे ख्याल से कम होता है. The company is being liquidated. The owners of the subsidiary company listed in okay. The company is liquidated and brings all the assets in the parent company and only the okay. If it is a child company which is existing on the exchange, then they will be trying to get again merged into the parent company. So in that case, the company will be liquidated and that entire shares will be getting transferred to the parent company. And last, most important reason will be bankruptcy. Okay. Now, what are the listing requirements? Every exchange is free to set their own listing requirements. In summary, most of them will include factors like market cap, minimum turnover. ये ऐसा हुआ कि जो हमने listing requirements देखा था for an IPO, if you remember. Now, any company which is getting listed first time on the exchange has to follow the same norms which you have already studied. So that is why it is asking for market cap, minimum turnover, and most of the exchanges will automatically proceed to delist the stocks after they have become penny stocks. ठीक है? Penny stocks मतलब cheap stocks. कम वाले, 10 से कम वाले. Process of delisting. In case of a delisting is initiated, often it will issue first of all warning to the company. If the company still not comply with the listing rules, the exchange will proceed to announce a delisting. SEBI automatically announcement दे देगी. If a company decides to delist itself, it has to request approval from the SEBI and complete the appropriate documentation. The decision to delist the company has to be announced and made to the public. Most important. All the shareholders will be notified and given time to think on what they want to do with the shares. On the effective day of delisting, the shares will stop trading on the exchange and they will be booked out of accounts of custodians, banks and broker dealers. Please write it down. It is very important. उसका value 0 हो जाएगा. ठीक है, फिर आप बेच भी नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं कर सकते. अब जब भी रेपो ये रेट डिक्रीज होगा ना, उस टाइम पे कॉल राइटर्स विल बी ट्रैप्ड एंड पुट राइटिंग बढ़ जाएगी. ठीक है, तो एक बार तो आएगा ही आएगा वापस, लेकिन आई थिंक दिवाली टाइम तक जब वो क्वार्टरली मीट आएगा ना वापस, क्योंकि 6 महीने ये सब थोड़ा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखेंगे, थोड़ा अभी 6 महीने कुछ नहीं होगा. हाँ, काफी टाइम से कांस्टेंट ही चल रहा था वो तो होना ही था. कितना इन्फ्लेशन बढ़ गया है हर एक चीज में. एनीथिंग यू सी द प्राइसेस हैव शूटेड लाइक एनीथिंग. इसका मतलब वही हुआ, लिक्विडिटी कम की जा रही है मार्केट से, सो दैट डिमांड विल फॉल. डिमांड फॉल होगा तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस विल कम डाउन. इकोनॉमिक्स जिनका भी टॉपिक है. ठीक है, done, written everyone. Online students, so far clear everything? Any doubts so far? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Okay, next are the voluntary actions of corporate companies. Mandatory khatam ho gaya, voluntary. Now, voluntary corporate action is such actions where the shareholders will be electing to participate in the action. A response is required by the company to process the action. मतलब वो एग्जांपल जो मैंने दिया था कि जो लोग ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं उनको ईमेल आता है
whether they are going for the going for the meeting or not, or whether opting for any particular decision or not. In such cases, they are asked to provide the response. जैसे for example tender offer, अगर tender offer for any shares है कि कुछ price है या कुछ भी है, अगर वो voluntary corporate action है, every shareholder has to send their particular response. अब वो response दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते, not necessary. But अगर majority में जो भी decision आएगा, that company has to follow. Okay. So corporation may request shareholders to tender their shares at a predetermined price. The shareholder may or may not participate in the tender offer. Shareholders will be sending the responses to the corporation agents, and the company will send the proceeds of the action to the shareholders who elect to participate. For example, in case of a cash or stock dividend option, the shareholder can elect to take the proceeds of the dividend either as cash or additional shares. ऐसा कुछ होगा तो, otherwise dividend तो cash के form में ही आएगा. ठीक है. एक चीज याद रखना, डिविडेंड्स अगर आ रहे हैं तो आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, बोनस हाँ सेविंग अकाउंट, या तो whichever अकाउंट इज लिंक्ड टू योर डीमैट अकाउंट. बोनस शेयर्स कहाँ पे आएंगे? डीमैट में आएंगे. ठीक है. अब उसको सेविंग अकाउंट में मत बोल देना. ठीक है. A little fundamental difference. Tender offer is a public and open offer by and acquired to all the stockholders of a publicly traded corporation to tender the stock for sale at a specified price. In tender offers, the bidder will be contacting shareholders directly, inviting them to sell their shares. Tender मतलब ये होता है कि कंपनी बोलेगी more of like a buyback, whether you want to surrender your shares or not. ठीक है. Now you can participate or you don't want to participate, depend करेगा. ज्यादातर participate नहीं करना चाहिए. Cash and other securities may be offered to the target company shareholders as consideration. Although a tender offer in which the securities are offered as consideration is generally referred to as an exchange offer. Okay. Rights issue, a security which is giving stockholders entitlement to purchase new shares issued by the company at a predetermined price, which is normally less than the current market price, is known as rights issue. So write it down. What is rights issue? किसी ने स्टॉक मार्केट के रिलेटेड मूवीज देखे कोई भी? वो एक बिग शॉट और मार्जिन कॉल. बॉयलर रूम किसी ने देखा है? बॉयलर रूम. ओके. बॉयलर रूम इज गुड. फिर इनसाइड जॉब. हाँ. फिर टू बिग टू फेल. फिर ट्रेडिंग प्लेसेस. ये तो पता नहीं, वो आपको ढूंढना पड़ेगा. मेरे पास लिस्ट है सर, आई डोंट नो अभी कौन कहाँ पे है. गफला करके एक तो था, आई थिंक हिंदी मूवी है शायद. यस सर. देखिए बाजार भी है. बाजार मैनिपुलेशन यू कैन एक्सपेक्ट ओवर देयर. कैसे होते हैं वो दिखाओ कि क्या होता है मैनिपुलेशन. सर आर्बिट्राज करके भी एक मूवी. हाँ. आर्बिट्राज.
हाँ आर्बिट्राज, हाँ मूवी है। हाँ करेक्ट। Rights issue are also known as subscription rights. Now, rights issue are generally issued to those investors who are loyal to the company. Extra shares कुछ दे देंगे, but not bonus. If you are having 100 shares, तो 10 shares will be issued to you as a rights issue, not as a bonus. Please don't confuse the concept of bonus with the rights issue. ठीक है, वो दोनों अलग अलग है. Say for example, investor is holding 100 shares in company X, which he had purchased from secondary market through investor Z. Company X is offering him rights issue in the ratio of 3:5 at rupees 90 per share, which is 25% discount to the current market price of 120. A has the right to buy up to 60 shares. Why? 3:5 का ratio है, तो 3/5 into 100, which is 60 at the price of 90. ठीक है, मतलब 60 into 90 कितना हुआ? 5,400, which would otherwise have cost him rupees 7,200. Why? क्योंकि 120 का भाव चल रहा है अभी, तो 120 into 60 will be 7,200, लेकिन वो डिस्काउंट पे ऑफर किया था. प्लीज नोट दैट इन्वेस्टर्स कैन चूज टू रिजेक्ट आल्सो द राइट्स इशू. कंपलसरी नहीं होता है राइट्स इशू. लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो. ठीक है, लेकिन एक मेंटालिटी ऐसे कि फ्री का कुछ भी मिले, नो वन एक्चुअली लीव्स इट. ठीक है, 2 रुपए का पेटीएम का कैशबैक नहीं छोड़ते हैं. यहाँ तो कहाँ शेयर्स कहाँ छोड़ेंगे. ओके, राइट्स इशू इन इंडिया. A few features of the rights issue by the Indian companies are noteworthy. Rights issue sometimes work in the favor of the promoters. In such cases, minority shareholders often feel the pressure, and therefore SEBI came up with the takeover code. Why? अगर see promoter जो है उसका भी तो shares है, तो buyback में उसको भी तो he will be eligible. तो उसके बाद तो कितने extra rights issue के shares हो जाएंगे. तो SEBI ने क्या किया? SEBI came up with a takeover code to safeguard the interest of the minority shareholders of the firm. Okay, so just write it down. What is a takeover code? What is a takeover code? Kajal, are you there? Hello. Kajal, can you call me up after the session today? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, now what are the stages in the rights issue? Distribution of rights entitlement by the issuer to the existing shareholders. Shareholders elect or decline to subscribe to the offer of new shares or may trade with their entitlement with another investor. Different how the process of rights issue is being carried out, that is what it is being explained. The issue price should be decided before determining the record date. कल हमने देखा था ना, X date, record date, payout date वगैरह. A rights issue should be open for subscription for a minimum period of 15 days. IPO के कितने होते हैं?
maximum of IPO is open for how many days? No, 3 days. हाँ 3 days. वो प्रोसेसिंग के लिए पूरा 10 दिन है. ठीक है. The issuer can utilize funds collected in rights issue after the finalization of the basis of the allotment. ठीक है. If the issuer is withdrawing the rights issue after announcing the record date, it cannot make an application for listing of its any specified securities on any recognized stock exchange. तो जो भी उसको issued होगा rights issue, वो shares वो बेच नहीं सकता है तब तक जब तक उसके डीमैट अकाउंट में नहीं आ जाते. No issuer shall make a rights issue of equity shares if it is outstanding fully or partly convertible debt instruments. अगर debt instrument है तो फिर of course we cannot be entitled for that. ठीक है. Okay, nil paid is there mandatory. ठीक है. Now nil paid rights. To estimate the capital gain that an investor may secure by selling the rights issue, an approximate value will be calculated as rights issue share is equal to adjusted X right price minus rights issue price. तो for example, अगर वो पहले प्राइस चल रहा था 1.8, बाद में राइट्स इशू पे दिया था 1.5.3 का गेन हुआ पर शेयर. हाँ एक्चुअल में मतलब वो जब भी वो 120 वाला और 90 वाला, हाँ तो 7,200 minus 5,400 has been the difference that actually you should have incurred in terms of profit. Otherwise आपको वो 7,200 पे खरीदना पड़ता. ठीक है. So this is how that actions are working. Mandatory events with the options. अगर options की अब mandatory corporate actions कौन सी हो सकती है? अगर cash stock option. Shareholders are sometimes only offered the choice to receive the dividend in cash or in additional shares of the company. Reinvested often carries a tax shield. अगर reinvest कर देते हो तो आपको capital gain tax नहीं भरना पड़ेगा. ठीक है. What is capital gain tax? हाँ करेक्ट. तो उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है. LTCG. ठीक है. काफी टाइम से रिमूव करने के लिए बात चल रही है लेकिन हुआ नहीं है. Merger with elections, merger of 2 or more companies into one new company. The shares of the old companies are consequently exchanged into shares in the new company according to a set ratio. We have seen the example recently of HDFC and HDFC Bank. Shareholders of both the companies are offered choices regarding the securities they are receiving or having it. Spin-off is of course a distribution of the subsidiary stock into the shareholders of the parent company without having cost to the shareholder of the parent issue. तो announcement होगा, उसके बाद validate किया जाएगा data, identification and notification, processing of the election, event settlement and reconciliation. Now this are all the processes of corporate action and events. Just write the steps or processes or even just write life cycle of corporate actions. Life cycle of corporate actions. That written everywhere. So what is announcement? Collect the appropriate information regarding the given corporate actions
and then prepare it for comparison, normalize, reconcile the data so that duplication of data can be removed, validate it for accuracy. Now, these are the steps more from the admin perspective. Determine investors which will be impacted by this event and also notify the investors of announcement information. Reconcile all the elections, communicate elections from investors through various financial intermediaries. Submit instructions before the deadline, deliver the securities if necessary, receive the securities if required. Buyback होगा तो और rights issue होगा तो दोनों में vice versa. Reconciliation finally, what will be the final change in the price of the stock? Notify investors of the final transactions and then close and complete the event. These are more of steps which are generally followed from the administrative perspective. You just need to be aware about it. That's it. Okay. So here we are completing corporate actions. Okay. We have completed AMC also, right? Trade life cycle is there. Okay. AMC is there. Trade life cycle is there. Okay, we will take this topic for today. Stock borrowing lending छोटा ही है. Let's start. एक और लेक्चर है ना आपका फिर फ्राइडे को. कल तो सॉफ्ट स्किल्स है. फ्राइडे को अगर हो सकता है तो कोलेटरल ले लेंगे क्योंकि ट्रेड लाइफ साइकिल फिर पूरा एट अ स्ट्रेच खत्म कर देंगे. उसके बाद आपका रहेगा रेफरेंस डेटा मैनेजमेंट, ISDA डेटा आइडेंटिफायर और रिकंसिलिएशन. रिकंसिलिएशन आता है क्या किसी को? अकाउंट्स वाला कोई? चलो, let's have a break and then we will start this stock borrow lending. Okay, online students have a break and we will connect after some time. Yes, sir. Okay, sir.
चलो एवरीवन बैक. Yes, sir. ओके, चलो ये खत्म करते हैं थोड़ा जल्दी से, इसमें कुछ है नहीं. तो फिर वी विल स्टार्ट विद देन फ्राइडे को कोलेटरल, और नेक्स्ट वीक ट्रेड लाइफ साइकिल, रेफरेंस डेटा, ISDA, और आपका आएगा रिकंसिलिएशन अगर टाइम मिलता है तो, क्योंकि ट्रेड लाइफ साइकिल एक दिन में तो नहीं खत्म होगा. 2 लेक्चर्स उसके हैं, ISDA भी 2 लेक्चर इंक्लूडिंग रेफरेंस डेटा. शायद नेक्स्ट वीक तो ऐसे ही चला जाएगा, देखते हैं चलो क्या होता है. कौन सा सर ये AML KYC तो अलग टॉपिक आता है ना सर, सेकंड लेवल पे. क्या बोल रहे हो? कैन यू जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स. ये वॉल्यूम का कुछ इश्यू आ रहा है मेरे पास. हाँ, आपका ओके सर. आपका ट्यूसडे या वेडनेसडे को ही शेड्यूल कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी लेवल 1 का सॉरी सिबॉप 9 का लेवल 2 का मॉक्स है, तो साथ में फिर आपका वो लेवल 1 ले लूंगा उससे. किसी का और का तो पेंडिंग नहीं है मेरे ख्याल से. आपका भी है ना? हाँ, तो आपका भी साथ में उस दिन सेम, आपका भी पेंडिंग है. जैसे कुछ फाइनलाइज होता है तो आई विल अपडेट यू. फ्राइडे तक आपको अपडेट कर दूंगा वो. ट्यूसडे या वेडनेसडे इज फाइनल. उनका भी वही है, उनको एक दिन और चाहिए पढ़ने के लिए ट्यूसडे, तो इसलिए वेडनेसडे को डिले कर रहे हैं. तो वेडनेसडे को अगर होता है तो आपका भी वेडनेसडे हो जाएगा आफ्टर द लेक्चर, आप तीनों का, ठीक है? ये पूरा लेवल 2 थियरी है, कुछ प्रैक्टिकल अब बचा नहीं है. क्योंकि सी मोर और लेस ऑल दिस डिफरेंट वेज, आपको बस यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव से कैसे काम करना है, कौन कौन सी चीज का ध्यान रखना है वहां पे जाके, ठीक है? तो लेट्स सी कि क्या होता है. चलो, व्हाट इज सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग? स्टॉक लेंडिंग इज द टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज by a lender to the borrower with agreement by the borrower to return equivalent securities to the lender at the pre-agreed time. In reality, the securities are not actually lent. The securities are sold to the borrower under an agreement for subsequent re-acquisition of equivalent securities. ऐसा कहाँ पे देखा था? Repurchase agreement, repo agreements में, right? Seller was going to sell his particular securities to the borrower. Sorry, to the मतलब seller is going to buyer of that securities, and buyer of the securities will be returning back those securities once the amount is being returned, notional amount. लेकिन अगर वो रिटर्न नहीं करता है, डिफॉल्ट हो जाता है, तो buyer will have the right to execute or sell his securities, ठीक है? Most of these activities will be taking place over the counter market against the collateral. Collateral is of course an equivalent amount of security provided for the given securities. मतलब अगर मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए हैं फॉर एग्जांपल, तो आपके एंड से मुझे 1 लाख का कुछ कोलेटरल चाहिए इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, इन टर्म्स ऑफ कैश, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर फाइनेंशियल एसेट, ठीक है? इन शॉर्ट जो गिरवे पे रखते हैं उसको कोलेटरल बोलते हैं, इफ एनीवन एवरीवन इज अवेयर अबाउट, ठीक है? कोलेटरल इज लाइक surrendering your particular financial assets in exchange of any liabilities that you are taking. Securities lending is a misleading term because in legal terms the securities are not actually lent but they are actually sold, ठीक है, to the borrower with an agreement to reacquire equivalent securities in the future. The original securities may be sold onward by the borrower to the third parties. The absolute title is passed over both the securities lent and the collateral received. Why security lending is carried out? For a variety of reasons, such as ensure settlement of trades that will be taking place, and second, facilitate market making and other trading activities such as hedging and short selling. ठीक है, तो किसी को शॉर्ट सेल करना है या हेज करना है या इवन मार्जिन लेवरेज के ऊपर खेलना है, it will be used for that particular purpose. So just write it down, why security is lending, and mention these particular points.
that written everywhere? See, let me show you one thing else. अकाउंट नहीं क्रिएट करना है, लॉगिन करना है। हाँ यस, आज पुट ऑप्शंस में इतना पैसा बना एक दिन में। सब कॉल्स भेजे हैं, वो हमको भी नहीं पता है। इनिशियली स्ट्रैंगल था, स्ट्रैंगल हमने पढ़ा हुआ है, मतलब कॉल पुट दोनों बेचा था, ठीक है। फिर देन बुलिश, बट एज न्यूज अबाउट आरबीआई स्टेटमेंट केम स्क्वायर्ड ऑफ लॉन्ग्स। तो लॉन्ग मतलब कॉल जो शॉर्ट किया, सॉरी पुट जो शॉर्ट किया था वो उसको या उनको वो मतलब स्क्वायर कर दिया एंड स्टार्टेड शॉर्टिंग एग्रेसिवली, मतलब कॉल ऑप्शन को ही एग्रेसिवली शॉर्ट कर दिया। रिकवर्ड एंटायर लॉस, मतलब वो तो ठीक है चलो। सी ऑप्शंस में मतलब ज्यादातर वही सेल किया हुआ है कॉल ऑप्शंस को। 24,500 was the quantity. This is the quantity. और उन्होंने लिखा भी था, the reason was expected aggressive selling in the last hour. Why? Because and
है. Also she is carrying shorts for tomorrow. उन्होंने शॉर्ट्स को मतलब किया हुआ है, वो कर सकते हैं ऐसे. उनको 1-2 लाख से कोई फर्क नहीं पड़ता है. इवन 5-10 लाख से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता. 1-2 लाख तो छोटी बात होगी. This is how big players are playing in the market. And she is, मेरे ख्याल से उसकी एज भी आपकी तरह ही है, मेरे से भी शायद छोटी है. See, just look at her face. लगता है बड़ी है. ठीक है. बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने आज पैसा बनाया है. But you have to be, see, while trading into this particular markets, specifically into options, you cannot move here and there in front of the screen. Okay? It has to be like very sharp attention on the screen. अगर हिले वहां से तो फिर गए, ऐसा ही समझ लो. Okay? So let's get back to this. Okay. Now, who are the market participants of securities borrowing? Bank, market makers, hedge funds, traders, mutual funds, and broker dealers. We already know broker are executing the orders on behalf of their clients, whereas a dealer will be trading from their own account. What sort of securities are traded in SBL? It can be related to anything. Securities lending will cover securities such as equities, fixed income instruments, corporate debt obligations. Collateral will be cash or securities or combinations of both. This is how the entire transaction will take place. जो लेंडर होगा, सिक्योरिटीज कोलेटरल विल बी प्रोवाइडेड और ये बोरोवर होगा. ठीक है. इन रिटर्न अगर इंटरमीडिएट है तो फीस देंगे, अदरवाइज इंटरेस्ट विल बी पेड टू द बोरोवर. ठीक है. व्हेन अ सिक्योरिटी इज लोन, द टाइटल ऑफ द सिक्योरिटी इज ट्रांसफर्ड टू द बोरोवर. दिस मींस दैट द बोरोवर हैज द एडवांटेज ऑफ होल्डिंग द सिक्योरिटी एज दे बिकम ओनर ऑफ इट. प्लीज रिमेंबर, दे आर एक्चुअली बिकमिंग द ओनर अनलेस एंड अंटिल दैट लायबिलिटी इज नॉट रिटर्न. The borrower will receive all the coupon and dividend payments and any other rights such as voting rights also. Why? Because he is the owner of the equity shares as of now. In most of the cases, these dividends or coupons must be passed back to the lender in the form of what is referred manufacturing dividend. For example, अगर जिसका security था उसने वो loan repay कर दिया and now he is demanding his securities back, then all those dividends, bonus, rights issue, bonus, everything has to be returned back to that particular seller. And that is known as manufactured dividend or manufacturing cash bonus back or जो भी है. ठीक है. So just write it. Question: what is manufactured dividend? What is manufactured dividend? समझ में आया? व्हाट इज मैन्युफैक्चर्ड डिविडेंड? जो भी उनको मिला होगा वो उनको वापस करना होगा once the transaction process is completed. And what is triplicate? SBL triplicate वैसे सुना है किसी ने? किसी ने नहीं सुना है ट्रिप्लिकेट? ना, वो डायरी रखते हैं, उसमें 2 वो कार्बन कॉपी वाला पेपर रखते हैं, so that 3 copies of the same particular receipt और जो भी होता है वो बना सकते हैं. उसको ट्रिप्लिकेट बोलते हैं. ठीक है. डुप्लीकेट सुना है लेकिन ट्रिप्लिकेट नहीं सुना होगा. ओके. Now here custodian will be there. Company ABC are there. Company A requires 1000 shares of Reliance. Company C is having their shares. Stock borrow lending will be taking place between them, and company B will be acting as a custodian or the service provider, for which he will be charging fees from both of them, company A and company C. So custodian is providing custodial services to company A, company B and C. Company A requires the Reliance 1000 shares and company C has the stock of that 1000 shares. In this case, custodian becomes the guarantor and no market risk as custodian knows both the counterparty. Customer will be charging the fees for that. Okay. What is collateral management? Of course, we are going to see the entire chapter, but collateral management is the method of granting, verifying and giving advice on collateral transactions to reduce the credit risk in unsecured financial transactions. So just write the definition of what is collateral management.
कोलेटरल, चलो गेट बैक, बाद में करते हैं डिस्कस. Collateral is legally watertight, valuable liquid property which is placed by the recipient as security on the value of the loan. Of course, loan के साथ ही आएगा collateral. The main reason for taking the collateral is to reduce the credit risk. कल अगर वो default हो गया तो उसका loan का पैसा कैसे recover करेंगे? You need to have that security so that at least you can recover the amount that you have given as loan. Correct? Collateral can be managed bilaterally or even by a third party. Third party अगर manage करती है तो दिक्कत होती है वैसे. ठीक है. Bilateral is between two parties. The borrower gives collateral directly to the lender either in form of cash or securities, and tri-party management is outsourced to an agent. लेकिन agent होता नहीं है वैसे. Movies में देखा है हम लोगों ने, right? वसूली types. वही होता है ना, और क्या होता है एजेंट यहाँ? ठीक है. Once informed of a transaction between two users, tri-party agent will be selecting a basket of collateral from the account of the seller, the contents of which fall within the eligibility criteria predefined by the buyer and delivers the selected collateral. That is fine. This calculates the fair value of the collateral. Now one more thing in the collateral cases, collateral में कैसे होता है? Say for example, if you are taking a gold loan, ठीक है, अब gold का price क्या चल रहा है? 50, चलो let's take it around 50, ठीक है. अभी actually कोई भी बैंक जो gold loan देती है, they will be first of all reducing their risk, either market risk or credit risk by 30%. कैसे? वो गोल्ड की वैल्यू काउंट करते हैं 70% पे, तो 35,000 हुआ गोल्ड का वैल्यू. नाउ इफ यू आर सरेंडरिंग से फॉर एग्जांपल 20 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, तो आपका एक्चुअली लोन अमाउंट होगा सिर्फ 35 into 20, दैट इज 70,000 ओनली. एक्चुअल कितना होना चाहिए था? 1 लाख, लेकिन 30,000 उन लोगों ने वो कवर ही कर लिया. गोल्ड का रेट कभी 35,000 अभी के लिए तो नहीं जाने वाला है, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस दैट पर्टिकुलर क्रेडिट रिस्क एंड मार्केट रिस्क थ्रू सच स्ट्रेटेजीज. ठीक है. Custodians play a very important role in the OTC derivatives also by providing collateral management services. To provide these services, they will be performing functions such as evaluating the terms of ISDA credit support. ISDA credit we will be seeing in the one of the lectures of ISDA report. Check availability of initial collateral that will be provided. Most important will be the quality of the collateral. अगर मैंने गोल्ड लिया हुआ है कोलेटरल का और 18 कैरेट वाला दे दिया है गलती से और उन लोगों को लगा वो 24 कैरेट वाला है, तो क्या होगा? Definitely there will be issues, right? So the quality of the collateral that you are providing is most important. Coordination with the credit and risk management, considering the risk profile of the borrower. ठीक है, और so that at least पता चले ना कि इसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. विजय हिमालय जैसा हो गया तो क्या होगा, right? Collateral management in stock borrowing. Now there is wide range of possible collaterals which will be used in stock borrowing and lending with various degree of risk. Identify, if I am asking the question, identify the different sources of collateral in stock borrowing lending, then that can be cash,
government securities, mortgage-backed securities, corporate bonds and commercial papers, letter of credit, equities, covered bonds and government agency securities. यहाँ पे सिर्फ एक होमवर्क में क्वेश्चन लिखो, what is letter of credit? What is letter of credit? Rest all these things can be provided as collaterals. Now, what are the fees and rebate? The stock borrowing lending fees paid by the borrower to the lender will vary according to the nature of the securities lent and also to the nature of the transaction. Other factors include credit worthiness of borrower, duration of the loan, and type of collateral which is used will also affect the final fee. The lender who receives cash collateral from the borrower will reinvest it. He will earn spread between reinvestment rate and the agreed rebate rate which he pays to the borrower. अब lender and intermediaries. Now कौन से इसमें intermediary आ सकते हैं? ज़्यादातर investment bankings या bank खुद itself if they are working between two other banks or any other specialized agents who want to help two parties to carry out stock borrow lending. ठीक है? Other तो some of the common agents are asset managers, custodian banks and specialized third party. So if you are asked who are the intermediaries in SBL, तो आपको बोलना है asset manager, custodian banks and specialist third party agent entities. ठीक है? Borrowers will be borrowing the securities to cover the short position in the market, settlement coverage and naked short covering or naked shorting. Naked shorting मतलब you are shorting the market without hedging. मैंने कॉल को एक शॉर्ट किया है और एडिशनल कोई कॉल बाय नहीं किया है फिर. ठीक है? और ये तभी होता है जब आज जैसे आपने मार्केट देखा उस टाइप का अगर होगा तभी. Otherwise it's very difficult to handle that particular naked calls. Okay? Market makers will also need to able to borrow securities in order to execute buy orders. In other words, they are trying to bring in capital through stock borrow lending. Any of these entities, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? कैसे भी करके कैपिटल रेज कर रहे हैं फॉर शॉर्ट टर्म और मैक्सिमम लॉन्ग टर्म अगर भी है तो 1 साल या 2 साल, उससे ज्यादा नहीं होगा. ठीक है? ट्रांसफर ओनरशिप विल बी टेम्पररी. वी हैव सीन दैट डिविडेंड्स वगैरह वो सब आपको वापस करना पड़ता है. बट इफ दैट कैन बी योर्स ओनली इफ योर this seller of the securities will be getting defaulted. Otherwise, it will remain the same. Now, what are the benefits of this transaction? Increases the liquidity of the market. और पैसा आएगा अगर market में तो definitely the liquidity is going to increase. Support many trading and investment strategies. Allow the investors to earn income by lending their securities on the third parties and facilitate hedging and arbitraging, which is most important. Okay. Disadvantages, of course. Counterparty risk is one of the major risk over here. Default हो गया तो problem होगा unless and until you don't have a collateral. Market risk, the price of the securities will get changed and it will affect the collateral which is provided in the security. Gold का भाव सच में 30,000 हो गया तो definitely collateral भी fail हो जाएगा. ठीक है? And high fees, the fees which will be charged by the intermediaries. So how does stock lending is different from repo? A stock lender charges a fee. In securities lending market, its equities are acting as a financial instrument. A repo is a counterparty where pays or receives a rate of interest, and repo market bonds and other fixed income instruments are used as collateral. So this is a basic difference between SBL and repo. Please write it down. दोनों का एक टेबल बना दो. Left side SBL, right side repo. दोनों पॉइंट्स लिख दो. मतलब so I am the seller and you are the buyer. Okay. No. हाँ, but you can't do that. ट्रांजेक्शन के बाद अगर वो वहां से आपने आगे भेज दिया और आपका जो एंटिटी था जिसके साथ ट्रांजेक्शन वो डिफॉल्ट कर गया तो फिर मेरे ओरिजिनल सिक्योरिटीज का क्या होगा? मैं किसके आपके मेरे आपका कोलेटरल तो है नहीं मेरे पास, सो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल. लेवल 2 वैसे छोटा है लेकिन लेंथी है तो इसलिए वी आर डिवाइडिंग इनटू पार्ट्स. अदरवाइज तो इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. अभी
जैसे ISD और वो सब स्टार्ट होगा तो हाँ आउट ऑफ रेंज ही हो जाओगे सब। swap, right? We can do that. If, क्या? we are entered into equity swap. According to theoretical जो value equity का, that on that I'll be paying the interest for what. But in practical, I can even I can set the position on second. No, if you are exchanging equity, no, equity swap is not meant for that purpose. Equity swap is meant for only exchanging the rate. No, the rate of returns for your equity portfolio and rate of returns of that another fixed instrument. So Underlining that you cannot alter it. okay, theoretically we have to say, but practically I can. No, unless I can do it if it is my portfolio, I can edit myself. Yeah, but theoretically जो पेपर में पहले decided होगा जो भी हाँ वो रहेगा. Written everyone. शायद आपका लेक्चर नहीं होगा, छुट्टी है शायद आपको सॉफ्ट स्किल्स में. सॉफ्ट स्किल्स वाले अवेलेबल नहीं है. क्या हुआ? अच्छा वो कौन सा या यूट्यूब वाला? वो यूट्यूब ही है ना वो. अरे लेकिन वो बना दिया है ना, सिर्फ वो भेजना है ना शायद आपको. तो एटलीस्ट एलिवेटर पिच बना तो लो, भेजना. तो ये सर हमने बना लिया एलिवेटर पिच, बट वो लिंक एक्सपायर हो गया. लिंक एक्सपायर हो गया होगा. हाँ क्योंकि उस वक्त मुझे मेल ही नहीं आया था सर वो. ठीक है ठीक है. नॉट श्योर मेल आएगा आपको. आई एम नॉट श्योर. वो मतलब उनका सॉफ्ट स्किल्स का कैसा है शेड्यूल, थोड़ा उसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो अगर कुछ चेंजेस है तो आज शाम तक अपडेट आ जाएगा या लेट नाइट तक मेल आ जाएगा, तो पता तो चल ही जाएगा आपको. चलो डन. रिटर्न एवरीवन. Now what are the reasons for SBL? We have already seen. Short selling is the selling of a stock that the seller is not owing. More specifically, a short sell is the sale of the security which is not owned by the seller but that is promised to be delivered. If a trader has sold the securities, it must borrow those securities in order to fulfill the settlement obligation. ठीक है, पहले से शॉर्ट किया हुआ है और उसको वापस उसको खरीदना है. जैसे जो हम वो शॉर्टिंग जो बोलते हैं, शॉर्टिंग द मार्केट्स. ठीक है. हेजिंग में क्या होगा? डेरिवेटिव मार्केट मेकर फॉर इंस्टेंस में नीड टू सेल द सिक्योरिटीज दैट इट डज नॉट ओन टू हेज अ डेरिवेटिव पोजीशन. अब वो हेज कब करेगा? अगर मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है और अगर मार्केट गलती से गिरने लगा, देन आई नीड टू सेल माय सिक्योरिटीज टू हेज इट. और लास्ट में होगा आर्बिट्राज. अ ट्रेडर में नीड टू सेल द सिक्योरिटीज शॉर्ट अगेंस्ट एन ऑफेंसिव डेरिवेटिव पोजीशन to take the advantage of the dislocation between cash and derivative markets. मतलब between cash and future markets की बात चल रही है यहाँ पे. If you want to just take the advantage of that particular extra premium which the futures are giving, you can definitely go for this arbitrage positions. So difference between okay SLB and repo तो लिख लिया है. Fees are different हाँ. यहाँ पे fees है, वहाँ पे interest rate है. Most important. And repo deals with only fixed income securities या money market instruments. और यहाँ पे तो पूरा equity portfolio है. Okay, ठीक है. So this is done about SBL. Okay. Any doubts in this SBL so far? हाँ. Arbitrage में see basically actually वो भी एक hedging pattern ही है, लेकिन क्या करेगा? Sell the security short against an offsetting derivatives position. Other way I am trying to negate my extra loss which I have already created through my positions. ठीक है. 2 दिन तक पोजीशन होल्ड किया, फिर पता चला नहीं यार इसमें तो और लॉस जा सकता है, तो देन आई अगेन क्रिएटेड अनदर पोजीशन बाय सेलिंग माय सिक्योरिटीज. ओके. और वो सिक्योरिटीज में प्रॉफिट बना के वापस ले लिया, बाय तो करूंगा उसको. ठीक है. अब डेरिवेटिव्स का जो लॉस होगा वो देखा जाएगा, वो लिमिट हो जाएगा. लेकिन ठीक है, नेकेड जो हमने शॉर्ट किया था उसकी बात हो रही है. बट यहाँ पे आर्बिट्राज में यू कैन फर्स्ट यू आर आइदर बाइंग कॉल ऑप्शन और बाइंग पुट ऑप्शंस एंड अकॉर्डिंगली यू आर क्रिएटिंग अ काउंटर पोजीशंस इन द मार्केट. अगर कॉल बाय किया है तो सिक्योरिटीज डेफिनेटली बेचोगे, पुट बाय किया है तो सिक्योरिटीज को बाय करोगे. ठीक है, तभी तो हेज होगा. ओके. So almost we have completed. Now see, this is how your level 2 looks like as of now. Asset management we have done.
ठीक है, हेज फंड ऑपरेशन एनएससी। अब ट्रेड लाइफ साइकिल आपका सबसे बड़ा टॉपिक है। यू कैन जस्ट चेक द पेज नंबर्स 22 से लेकर कहाँ तक है, 57 तक वही है। ठीक है, फिर आता है रेफरेंस डेटा मैनेजमेंट। नाउ दिस इज मोर फ्रॉम अ लिटिल बिट टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड आल्सो फ्रॉम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव। ठीक है, फिर उसमें आते हैं आईएसडी आइडेंटिफायर्स और कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ISDA master agreements, this is another topic, important one. Then corporate actions we have seen today both. उसके बाद आता है collateral and reconciliation, and then last में तो SPL आज हमने खत्म कर लिया। ठीक है, तो आपका बचा है अभी collateral and reconciliation, ISDA master agreements, reference data and trade life cycle. Approx 7 to 8 lectures we can count upon, मतलब 2 weeks अपने जो भी है। इसकी पीपीटी कुछ है लेकिन बहुत लिमिटेड है, क्योंकि इसमें पीपीटी बनाने का भी मीनिंग नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ चीजें आपको डायरेक्टली, हाँ पूरा थियरी है इसमें, आई कांट इंक्लूड एनी स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऐसा कुछ, लेकिन जहाँ पे कुछ ऐसा आएगा डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आपका ये थियरी पूरा थियरी है, और मोर दैट ट्रेड लाइफ साइकिल, रेफरेंस डेटा मैनेजमेंट, ISDA मास्टर एग्रीमेंट, एक्चुअली जॉब रोल में जो आप करने वाले हो ना, उसका डिस्क्रिप्शन ज्यादा है वहाँ पे कंपेयर टू एनी लाइव मार्केट्स या लाइव जो भी हमने लेवल 1 में देखा था, उस टाइप का नहीं है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा लेंदी है, थियोरेटिकल है, बट करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई थिंक देन अगर आज कौन सा हुआ है, सो 1 2 इन द लास्ट वीक वी कैन एक्सपेक्ट मॉक्स लेवल 2 के। ठीक है, बिटवीन 24th to 27th। ठीक है, क्या हुआ? कौन सी डेट पे? 22 पे है, तो अगर जल्दी खत्म कर देंगे तो आपका मॉक ले लेंगे। हाँ पहले आता है मेरा। हाँ, तो अच्छा है ना, आपका पहले ही आता है। 22 से कब तक है शादी? नहीं 18 से कुछ। अच्छा 18 से 22 तक है, तो 23 तक तो आ जाओगे ना। हाँ, अभी से कर लो ना, ये फर्स्ट वीक, ये सेकेंड वीक, ये थर्ड वीक भी आता है, 17 तक पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी पूरा 2 हफ्ता, उसमें भी 13 14 नॉट 13 सॉरी 14 15 16 3 छुट्टी आएगी, और हाँ इस हफ्ते की तो भी आएगी 7 8 9 6 हॉलीडेज है। ठीक है, और किसी को शादी, घर पे एग्जाम, कॉलेज, मेडिकल, ऑफिस कुछ भी पेंडिंग हो तो बता दो। मतलब हाँ, अकाउंट्स में इतना डेप्थ नहीं है, थोड़ा बैलेंस शीट्स एंड इनकम स्टेटमेंट्स, और जिसको अकाउंट रिकंसिलिएशन की कुछ नोट्स है तो प्लीज पुट इन द ग्रुप। ठीक है, कुछ डाल सकते हो, और कोई यूट्यूब का वीडियो अगर अच्छा मिल जाता है, आई थिंक एक का 2 है मेरे पास, मैं भी डाल दूंगा, बाकी किसी के पास है दे कैन आल्सो पुट इट। नहीं इतना डेप्थ में नहीं। एसेट मैनेजमेंट we have is done. KYC, I think we have discussed KYC, डिस्कस किया था। KYC में कुछ नहीं है, बस knowing your customers। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तो we have done in level 1 right? वो तो फाइनेंस, अरे किया है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी डिस्कस किया था 2002 का। हाँ, वी हैव डिस्कस AML। के पास कुछ नोट्स है AML के तो डाल देना, अगर नहीं है तो थोड़ा सर्च करके कोई एनीवन कैन पुट इट। अच्छा, LMS PPT ना।
LMS का PPT आई हैवंट सीन इट, तो मुझे पता नहीं। ठीक है, याद रखने के लिए सबसे हार्ड वन से ट्रेड लाइफ साइकिल बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए क्योंकि क्या क्या पढ़ना है क्या याद रखना है वही समझ में नहीं आएगा पहले। इसके बाद रेफरेंस डेटा मैनेजमेंट, इसमें भी ऊपर से जाएगा थोड़ा, और उसके बाद है ISDA आइडेंटिफायर्स, वो थोड़ा है डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वो मिक्सअप हो जाएगा फॉर श्योर। इसमें और कोई ऑप्शन भी नहीं है, दिक्कत ये है। बट लेट मी सी व्हाट आई कैन डू, अदरवाइज आपको यही अप्रोच इसमें तो रखना पड़ेगा, इसमें कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर फिर भी आता तो आई कैन शेयर इट। सिबोक 9 का भी वही इशू चल रहा है, उनका भी मतलब ऐसा हो गया कि अब जल्दी लेवल 2 खत्म हो। लेवल 3 में क्या उसमें तो 2 ही टॉपिक्स है, रिस्क मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, तो वो तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, वो तो प्रैक्टिकली नहीं। हाँ नहीं, एसक्यूएल तो नहीं होगा, एसक्यूएल तो डेटा एनालिटिक्स में आता है। एडवांस एक्सेल ठीक है, कुछ ऐसा होगा तो वी विल डिस्कस इन द क्लास। बेसिक्स चाहिए, नॉट नेसेसरी एडवांस चाहिए आपको। बट आप एक चीज उसमें क्या कर सकते हो, ये जो लिंक्डइन पे कोर्सेज वगैरह आते रहते हैं ना फ्री वाले, अब बहुत सारे हैं, मतलब सिंपली लर्न, जो कुछ भी आपको लगता है ना, जस्ट गेट 1 or 2 सर्टिफिकेशंस, वो सीवी में लास्ट टाइम पे रखने के लिए अच्छा रहेगा। वाई? बिकॉज एटलीस्ट वो दिखेगा उसको कि नहीं भाई इसको एक्सेल किया हुआ आ रहा है उसको। यूडेमी में हाँ यू कैन, मतलब वो कर सकते हो, फ्री वाला करना, पेड वाला मत करना, नॉट नेसेसरी टू गिव। नहीं वो दैट इज नॉट, वो कोई कोर्स किसी ने अगर किया है पूरा तो जस्ट शेयर द लिंक, या सिंपली लर्न है, बहुत सारी वेबसाइट्स है अब तो, लिंक्डइन है, सिंपली लर्न है, आई थिंक वन बेजोस इज आल्सो प्रोवाइडिंग। हाँ नहीं नॉट यूट्यूब, जहाँ से सर्टिफिकेशन मिल रहा है, यूडेमी है तो। अरे नहीं वो मैं समझ गया, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट अगेन वंस रिविजिट इट एंड गेट द सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट की एक लाइन लिख सकते हैं आपके सीवी में। नहीं वो सर्टिफिकेट जहाँ से मिला है उसका अगर हमको चाहिए तो वो बेटर है ना, तभी जाके तो हाईलाइट होगा, अदरवाइज उसका इंपॉर्टेंस कैसे पता चलेगा। ठीक है, एनी अदर डाउट्स? Completed IB basic 23 hour course from Udemy. Okay. हाँ क्या बोल रहे हो? इसके बारे में आई अच्छा नहीं वो बाद में, अभी नहीं, वो ब्रीफ वाला है ही नहीं, इसलिए ब्रीफ वाला एक लाइन में हो जाता, बिकॉज इट इज नाइदर एन इंस्ट्रूमेंट नॉर related to financial market nor related to anything, pure administrative and functionality है इसलिए। any other queries? एक सर्टिफिकेशन का कर सकते हो, सीवी में सीरियसली अच्छा हेल्प होगा, ट्राई कर सकते हो। और फ्री वाला ही ढूंढना, ठीक है, नो नीड टू पे दैट 500 1000 1500 2000 जो भी फीस रहता है, नो नीड फॉर दैट। मतलब जून तक तो हाँ 1 वीक में हो जाएगा। हाँ यस 1 वीक में हो जाएगा आपका, मतलब मिड जून या एंड जून तक तो आई थिंक यू विल बी फ्री। मिड जून तो मैक्स है मेरे ख्याल से। इसके 2 हफ्ते गिन रहे, लास्ट वीक में मॉक्स गिन रहे, 2 चैप्टर भी गिन लो, और एडिशनल इवन इफ आई एम प्लानिंग फॉर योर सॉफ्ट स्किल तो 1 हफ्ता तो मैक्स होगा। उसके बाद फिर भी चलो एक रिवीजन मॉक्स 3, मतलब जो वो सेकेंड वीक में अगर वी आर प्लानिंग तो जून के मिड में आपके फाइनल मॉक्स आ जाएंगे, फिर सिलेबस खत्म हो जाएगा। 3 no combined, level 1 level 2 and level 3, all 3 combined, and that will be your main mocks। अब वो बाद में होगा, पहले डोमेन उसके बाद अच्छा है।
Okay, चलो स्टूडेंट्स, वी आर क्लोजिंग द सेशन देन बिकॉज T1 T2 के basis पे कैसे वो फाइनल मार्क्स के स्कोर आ जाएंगे, वी विल डिस्कस। नहीं, उसके नहीं आएगा, बट आपका क्लासिफिकेशन कंपनीज मांगती है इंटरनली फॉर ऑल दिस प्लेसमेंट एक्टिविटीज, तो डेफिनेटली दे विल बी प्रेफरिंग दोज कैंडिडेट्स हु आर परफॉर्मिंग बेटर। ठीक है, तो ओनली थिंग इज प्रोफाइल या तो बेटर हो सकती है या तो पैकेज T1 के लिए उससे थोड़ा कम आएगा T2 के लिए और उससे कम थोड़ा आएगा T3 के लिए, बट ऑफ कोर्स आई विल नॉट विश कि किसी का भी T3 में हो। ठीक है, आपको मेहनत करनी है, आपको पता है क्या करना है, आपके पास टाइम भी है, सेशंस भी है, लेक्चर्स भी है, गाइडलाइंस भी है, एवरीथिंग इज देयर। मेहनत आपके करनी है बस, दैट्स द ओनली वे थ्रू व्हिच यू कैन अचीव दिस गोल्स। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, क्लोजिंग द सेशन एवरीवन। Thank you, sir.